हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 3 ऑन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में आपका स्वागत है। अगर आप ऑलरेडी मेरी पहली 2 वीडियोस देख चुके हैं तो उन वीडियोस में मैंने बताया था कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में जो इक्वेशंस यूज़ होती हैं वो एक्चुअल में डिराइव कैसे की जाती हैं, वो मोर्स थ्योरम पे बेस्ड है। तो वो मैंने अपने वीडियो लेक्चर 1 और 2 में क्लियर कर चुका है। थर्ड लेक्चर में मैं आज आपको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम का सल्यूशन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के द्वारा करके बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि इस मेथड में स्टेप्स क्या क्या होते हैं। स्टेप नंबर 1, ट्रीट ईच स्पैन एज अ फिक्स्ड बीम एंड कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। हमको हर एक स्पैन को एक फिक्स्ड बीम की तरह मानना है और उसके फिक्सिंग एंड मोमेंट्स निकालने हैं। जैसा कि हमने डेरिवेशन में भी देखा था कि एक पिन बीम थी, उसके दोनों एंड्स को हमने फिक्स्ड कर दिया था। ऐसा क्यों किया था वो आप लास्ट वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। राइट डाउन द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एंड मोमेंट्स, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, जॉइंट रोटेशंस एंड जॉइंट ट्रांसलेशंस। इसके बाद हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर द इंडिविजुअल जॉइंट्स। जो भी जॉइंट्स हैं उस पर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखेंगे। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ रोटेशंस बैक इनटू द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर द एंड मोमेंट्स। अब जितनी भी हमारी रोटेशंस की वैल्यू इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने से आई है उसे हम वापस स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में डालेंगे और एंड मोमेंट्स निकालेंगे। सो द क्वेश्चन इज, a beam ABC 10 meter long fixed at ends A and B is continuous over the joint B and loaded as shown in figure। तो इस बीम में क्या है, 2 स्पैन बीम है ABC, जिसमें कि क्या है, एक कंटिन्यूस जॉइंट है B। दोनों तरफ से वो फिक्स्ड है और बीच में जो कंटिन्यूस जॉइंट है वो पिन्ड है। कैलकुलेट द एंड मोमेंट्स एंड प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ऑल्सो स्केच द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम। द बीम हैज़ कांस्टेंट EI फॉर बोथ स्पैन्स। ये बीम जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है पार्ट AB, इस पे 5 किलो न्यूटन लोड लगा है 3 मीटर पे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड A, और जो पार्ट है BC उस पे 8 किलो न्यूटन लोड लगा है जो कि 2.5 मीटर है बोथ राइट और लेफ्ट साइड से इक्वली। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हमें निकालना है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। अगर ये दोनों एंड्स A और C फिक्स्ड नहीं भी होते, पिन्ड होते, तो भी हम इन्हें क्या करते, फिक्स कर देते। मतलब हम ऐसा मानते कि एंड्स A और C फिक्स्ड हैं और उसके बाद हम फिक्सिंग एंड मोमेंट्स निकालते। फिक्सिंग एंड मोमेंट्स के फॉर्मूले ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में दे चुकी हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई पॉइंट लोड लगा रहता है तो उसका फिक्सिंग एंड मोमेंट फॉर्मूला फॉर द लेफ्ट हैंड एंड इज़ गिवन बाय माइनस PAB² अपॉन L², जहाँ पे A और B जो है वो साइमल्टेनियसली 3 मीटर और 2 मीटर है इस डायग्राम के हिसाब से, और L² जो है वो टोटल लेंथ है 3 + 2 मीटर, दैट इज़ 5 मीटर, और P जो है वो पॉइंट लोड की वैल्यू है। सो MFAB which will be anti-clockwise is equals to minus PAB² upon L² is equals to minus 5 into 3 into 2 square divided by 5 square, which comes out to be minus 2.4 kilonewton meter. MFBA will be calculated clockwise and will be written as positive PBA² upon L², which is equal to 5 into 2 into 3 square divided by 5 square, which is equal to 3.6 kilonewton meter. MFBC is calculated anti-clockwise, which is minus 8 into 2.5 into 2.5 square divided by 5 square, which is equals to minus 5 kilonewton meter. Similarly, MFCB will be calculated as clockwise moment, which will be equal to plus 8 into 2.5 into 2.5 square divided by 5 square, which is equal to plus 5 kilonewton meter. Part 2, slope deflection equations. Since the ends A and C are fixed, hence theta A is equals to theta C is equals to 0। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एंड्स A और C फिक्स्ड हैं, इसलिए थीटा A और थीटा C को हम 0 ले रहे हैं। Hence there are only variables. How many variables are there? MAB, MCB, MBA, MBC। यहाँ पे जो कंटिन्यूस सपोर्ट है B वो मोमेंट कैरी कर रहा है।
अगर ये कंटिन्यूस सपोर्ट नहीं होता और यहीं पे हिंज्ड एंड कहीं और होता, नॉन कंटिन्यूस एंड ऑफ द बीम पे, तो वो कभी भी मोमेंट कैरी नहीं करता। क्योंकि ये कंटिन्यूस है इसलिए यहाँ पे एक मोमेंट दोनों तरफ MBA और MBC जेनरेट हो रहा है। Since the ends do not settle, hence delta deflection for each span is 0. तो यहाँ पे डेल्टा दिया नहीं हुआ है कि कोई भी जो सपोर्ट है वो सेटल हो ही नहीं रहा है, इसलिए हमने डेल्टा को 0 ले रखा है। Let us assume theta b is equals to positive and which is an unknown. The results will tell us whether theta b is positive or negative. So now for span AB, let us put the use of slope deflection equations. First one, MAB is equals to MFAB plus 2EI upon L bracket 2 theta A plus theta B minus 3 delta upon L. So this is the slope deflection equations. Now putting in the values of variables that we know, MAB is equals to minus 2.4. We have already calculated the value of MFAB. Plus 2EI by 5. The span AB is of length 5. 2 theta A, since I have already clarified, theta A will be 0 because it is a simply support end. Plus theta B, which is a variable yet unknown, minus 0 because delta is 0. So this comes out to be 0.4 EI theta B minus 2.4. Similarly, MBA is equals to MFBA plus 2EI by L bracket 2 theta B plus theta A minus 3 delta upon L. MFBA value is plus 3.6. So MBA is equals to plus 3.6 plus 2 EI by 5, 2 theta B plus 0 plus 0. Theta A again, which is a simply supported end, here also taken as 0, delta is 0. So MBA comes out to be 0.8 EI theta B plus 3.6. Now applying the slope deflection equations to the span BC. MBC is equals to MFBC plus 2 EI upon L, 2 theta B plus theta C minus 3 delta upon L. The value of MFBC is minus 5. The value of L here is again 5. Theta B is the unknown. Theta C will be equal to 0 because it is a simply supported end, and delta again is 0 for span BC as well. So this equation comes out to be minus 5 plus 2 EI by 5 2 theta B, which equals minus 5 plus 0.8 EI theta B. Now calculating the value of MCB, MCB is equals to MFCB plus 2 EI by L bracket 2 theta C plus theta B minus 3 delta upon L. MFCB we have already calculated as plus 5. So MCB becomes MCB is equals to plus 5 plus 2 EI by 5 plus into bracket 0 plus theta B minus 0. So MCB becomes equal to 5 plus 0.4 EI theta B. So we have already taken out the values of the moments M, BC, MCB, MAB and MBA. Since all these equations A, B, C and D are expressing the values of n moments in the form of the variable theta, which is still unknown, so we need another equation through which we can eliminate the value of theta B, or we can find out the value of theta B, which we can revert back and put it back into the slope deflection equations and find out the values of n moments. मतलब हमें क्या करना है कि अभी जो हमारी n मोमेंट्स की इक्वेशंस हैं वो वेरिएबल फॉर्म में हैं, थीटा भी अननोन है स्टिल, तो अभी हमें एक इक्वेशन और चाहिए, तो वो इक्वेशन कौन सी होगी? येस, यू गेस्ड इट राइट, ये होगी इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट द जॉइंट बी. वो कैसे लिखी जाती है? MBA प्लस MBC इज इक्वल्स टू 0. जो कंटिन्यूस जॉइंट है वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पे जो टोटल समेशन ऑफ मोमेंट होगा, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट एट द जॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू 0. इसलिए हम लिख रहे हैं MBA प्लस MBC इज इक्वल्स टू 0. So putting in the values of MBA and MBC from equations B and C from the previous solution,
0.8 EI थीटा बी प्लस 3.6 ये है MBA की वैल्यू, प्लस 0.8 EI थीटा बी माइनस 5 ये है MBC की वैल्यू. From this we can calculate EI theta B is equals to 1.4 divided by 1.6. अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसी फॉर्मेट में उसको आगे पुटअप करेंगे. Substituting the values of EI theta B in equations A, B, C and D. अब हमें फाइनल मोमेंट्स निकालना है. हमें EI theta B जो वेरिएबल हम लेके चल रहे थे अभी तक, उसकी वैल्यू हमें मिल गई है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से. अब हम इन्हें इक्वेशन A, B, C और D में वापस पुट करेंगे और हम एंड मोमेंट्स की वैल्यूज़ निकालेंगे. MAB इज इक्वल्स टू 0.4 EI थीटा B माइनस 2.4. 0.4 into 1.4 divided by 1.6 minus 2.4 gives minus 1.05 kilonewton meter. So MAB comes out to be minus 1.05 kilonewton meter. Similarly, MBA is equals to 0.8 EI theta B plus 3.6, which is equal to 0.8 into 1.4 divided by 1.6 plus 3.6 is equals to 4.3 kilonewton meter. Again, MBC is equals to 0.8 EI theta B minus 5, which is equal to 0.8 into 1.4 divided by 1.6 minus 5, which is equals to minus 4.3 kilonewton meter. Similarly, MCB is equals to 0.4 EI theta B plus 5, which equals 0.4 into 1.4 divided by 1.6 plus 5, which gives 5.35. So we have already taken out the values of the moments M, BC, MCB, MAB and MBA. Now to draw the bending moment diagram, let us first draw the beam ABC as shown in the figure. So we will first make vertical lines. We will first draw a horizontal line in blue color. Then we will join the corners of the beam A and C vertically with this line. We will treat this sky blue line as the base of our bending moment diagram. Now we will plot vertically the values of the end moments at A, B and C respectively. Since the value of moment MAB is 1.05, hence just marking 1.05 vertically above to some scale. Now plotting the value of MBC or MBA on this line as 4.3. Again we will plot the value of end moment MCB as 5.35 on the corner end. There is something missing in this bending moment diagram. Since there is loading as well, so we have to find out the loading moments. The value of the loading moment MP just below the load will be PAB upon L, which is equals to 5 into 3 into 2 divided by 5, which is equals to 6 kilonewton meter. Similarly, the value of the loading moment MQ just below the load 8 kilonewton at Q will be equal to 8 into 2.5 into 2.5 divided by 5, which equals 10 kilonewton meter. Now plotting this value vertically above the baseline as 6 and 10 up to the scale which you've already chosen. And now joining these points from A to 6 kilonewton, then to B, then from B to 10 kilonewton, then back to C. Since we see there are two overlapping bending moment diagrams, one of the end moments and one of the loading diagram moments. Since you can already observe and see that the loading diagram moments form a triangle and the loads cause the sagging of the beam, so these moments will be called as positive and I have marked them as positive. But the moments which we have drawn as end moments will be hogging moments. As you can see, if I draw the moments over the beam, MAB which is anti-clockwise and MBA which is clockwise, the effect of both moments on the beam is hogging. So these moments are causing hogging, so they will be demarcated as negative moments. In the span BC as well, the moment MBC is anti-clockwise and the moment MCB is clockwise.
So these moments are hogging, so they will be demarcated as negative moments. Now in the overlapping diagrams, the overlap part I have left and I have shaded the rest of the part. So the shaded part of the bending moment diagram is the resultant bending moment diagram.